Assalamu alaikum, dear students. Let's start our week number 10 of Introduction to Marketing. And week number 10 starts with marketing environment. First of all, let's take a look on the topics we will discuss in this class in this week. We will try to understand what is company's micro environment. Then we will see what is company's macro environment. Then there are some factors in the macro environment, for example demographic marketing environment, economic marketing environment, natural resources or natural environment, technological environment, political and social environment, cultural environment, and at the end we will try to understand how can we or how should we respond to our marketing environment. So students, first of all, we will try to understand what is company's environment. And to understand this, we will move to our slide number 1. So first of all, we will try to understand what is company's or what is marketing environment. So students, market environment means all the actors and factors and forces, all the actors and factors and forces which are outside the marketing. Outside the marketing does not mean outside the organization. Let me make you understand this topic easily. That in an organization there are different departments. For example, this is an organization and there is marketing department, there is IT department, there is production department, there is administration department, there is research and development department. So when we talk about outside the marketing, it does not mean outside the organization. It means it may the factors which are outside this department, and outside this department is IT department, is production department, is administration department, research and development department, and also finance department and other departments. So there are some factors which are outside the marketing department, but these outside these departments or these factors or forces or actors which are outside the marketing does not mean that they are outside the organization. There may be some factors which are inside the organization, but they are not the part of marketing department of the organization. That's why they are considered outside the marketing. Okay, that's why they're considered outside the marketing. So let's come back to the slide. So outside the marketing, all actors and factors which are outside the marketing that affect marketing management's ability to build and maintain successful relationship with the customers. So in organization and in marketing, we have studied and we know that companies or marketing department tries to create very good relationship and healthy and profitable relationship with the customers. In order to make very good relationship with customers, marketing team or marketers go to the customers to know their need, and then they come back to the other departments of the organization with the needs of the customers and to find the solution of the need of the customers. So students, what is marketing environment? Marketing environment means all the actors and factors and forces which are not the part of marketing department, but they are outside the marketing department. This they may be inside the organization and they may be outside the organization. Okay, which influence the decisions of the organization. मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको.
मार्केटिंग इन्वायरमेंट का मतलब होगा ऐसे तमाम के तमाम एक्टर्स और फैक्टर्स और फोर्सेस जो मार्केटिंग से बाहर हैं, कुछ मार्केटिंग से बाहर हैं और कंपनी के अंदर है, कुछ फैक्टर्स मार्केटिंग से भी बाहर है और कंपनी से भी बाहर है। वो किस तरीके से मार्केटिंग डिपार्टमेंट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं ताकि वो कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना सके। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। First of all, we will see the micro environment. तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज माइक्रो एनवायरनमेंट? माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो एक्टर्स, वो फैक्टर्स जो कंपनी के क्लोज हैं, दैट अफेक्ट द एबिलिटी टू सर्व इट्स कस्टमर्स। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे वो क्लोज कौन से हैं कंपनी के? मिसाल के तौर पे कंपनी, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अलावा जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं वो भी तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है ना। सो दीज आर द फैक्टर्स कंपनी। अब कंपनी के अंदर वाले भी फैक्टर्स हो गए और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कंपनी के बाहर हैं। ठीक है। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कंपनी के बाहर हैं लेकिन दे आर क्लोज टू कंपनी। कंपनी के बाहर तो है लेकिन ये बहुत ज्यादा क्लोज है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे कंपनी के क्लोज कौन है? कंपनी के क्लोज है, एक तो कंपनी हो गई मार्केटिंग के क्लोज, और कंपनी के क्लोज और कौन सी है? मिसाल के तौर पे दो सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन होते हैं? अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स ये कौन होते हैं? डिटेल में डिस्कस करेंगे। कस्टमर्स कौन होते हैं? डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंपेटिटर्स कौन होते हैं? अभी भी डिस्कस करेंगे। और आखिर में आएगा पब्लिक। ये वो लोग होंगे जो कंपनीज के बहुत करीब हैं, दे आर वेरी क्लोज टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द मार्केटिंग। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं जी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। माइक्रो एनवायरनमेंट। अब ये जो माइक्रो एनवायरनमेंट है इसके हम लोगों ने फैक्टर्स जो है वो देख लेने हैं। वन बाय वन तमाम के तमाम फैक्टर्स पढ़ेंगे। ये हमारी मार्केटिंग है और मार्केटिंग से बाहर निकल जाएंगे तो हमारे पास आएगी नंबर वन कंपनी, फिर आएगा हमारे पास सप्लायर, फिर आएगा इंटरमीडियरीज, फिर आएगा कंपेटिटर, फिर आएगा पब्लिक और कस्टमर्स। ठीक है। ये वो फैक्टर्स हैं, एक दो तीन चार पांच और छह, जो कि हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं। देखिए थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था दो फैक्टर्स, एक माइक्रो इन्वायरमेंट, एक मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट आर द फैक्टर्स विच आर क्लोज टू मार्केटिंग, क्लोज टू ऑर्गेनाइजेशन। ओके। और जो मैक्रो फैक्टर्स होंगे वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कंपनी के क्लोज नहीं है, इन्फ्लुएंस तो करते हैं कंपनी को बट दे आर नॉट वेरी क्लोज टू द ऑर्गेनाइजेशन। वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्यों कैसे नहीं करते, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन छह फैक्टर्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसके बाद आगे चलेंगे। चल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कंपनी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के डिसीजंस को कंपनी के मुख्तलिफ किस्म के जो फैक्टर्स होंगे वो इन्फ्लुएंस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप मैनेजमेंट। ठीक है। मार्केटिंग कुछ भी डिसाइड करे लेकिन अगर टॉप मैनेजमेंट ने जो डिसीजन ले लिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट को वही करना पड़ेगा, तो इट मींस मार्केटिंग डिपार्टमेंट, the decision of marketing departments are influenced by the top level management. Then finance, if company does not provide good finance, a company does not provide good economy, or company does not provide good amount and company does not invest a huge amount, then decision of marketing definitely will be affected. Research and development organization, the decision of marketing management will definitely be affected by research and development. If if your research and development department is up to mark and it is of good quality, then definitely marketing department will be successful. Number four, purchasing. If marketing department does not get good purchasing from the organization, then there will be a problem. Operations, performances, the criterias, procedures.
procedures are done and the activities are done by the production department, by manufacturing department. So if manufacturing department and production department is not well, then there will be problem. So and and at the end, accounting means finance department has to have to finance the projects, or has to give money and amount and finance to different activities of the organization. So these are the factors which affect the decision of the organization. Next. Next, the second factor which influence the decision of the organization are suppliers. Suppliers are those individuals and companies who provide with the raw material of the to the companies. Whenever the word material comes, it means they provide raw material which is processed to make a product. Okay. After using the raw material, companies process the raw material, and after processing the raw material, companies give a good company give a product or goods and services to their consumers and to their customers. Treat as partners to provide customer value. When we want to get good customer value, then we have to be the partner of the supplier, and we have studied this topic in our previous classes, that organizations have to make a good partnership relationship with the suppliers, because suppliers provide the raw material, and suppliers should always provide the good quality raw material in time raw material with good price. So there should be no problem in producing very good products for the consumers. So this was the second factor which influenced the decision of the organization. Then it is companies. Number three, then it comes marketing intermediaries. Marketing intermediaries are the factors which basically help an organization to make their product accessible to the customers. So they basically promote the product, they basically advertise the product, they basically ship the product, and they provide and distribute the product to the final buyer, final consumers. There are four types of marketing intermediaries. First of all, these are resellers. Resellers are those who purchase the product from company, and they resell the product to the consumers with little margin of profit. These resellers are wholesalers and retailers. Then physical distribution firms are the firms which have some vehicles. They have some vehicles, and they make our product accessible to the remote areas and different areas of the organization. Number three, financial intermediaries. Financial intermediaries are basically finance those who finance our products, and basically these are banks and other financial institutes which help organization to for the financial matters. Then marketing services and marketing agencies, who promote our product, who make ads for our products, and who make hoardings and boards and pamphlets and other things for the organization when required. So these are the four different types of marketing intermediaries. Number one, reseller. Number two, physical distribution companies. Number three, marketing services agencies. And number four, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स. तो ये चार किस्म के लोग हैं, ये चार किस्म के टाइप्स हैं हमारी इंटरमीडिएट्स की, जिसमें रीसेलर होगा. रीसेलर वो कंपनीज होती हैं जो हमारी प्रोडक्ट इसलिए खरीदते हैं कि हमारी प्रोडक्ट खरीदने के बाद वो थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन रख के एज इट इज कंपनीज को रीसेल कर देंगे, सॉरी कंज्यूमर्स को रीसेल कर देंगे, उनको भी बेच देंगे. नंबर टू आएगा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिनके पास बड़ी बड़ी बसें होती हैं, बसें नहीं, सॉरी बस नहीं होनी चाहिए, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, ट्रक होते हैं, शेजोरें होती हैं, सुजुकियाँ होती हैं, पिकअप सिस्टम कहते हैं. उनके पास सिस्टम होता है जिसके जरिए वो हमारी प्रोडक्ट्स को हमारी गोदामों से या हमारी वेयर हाउस से उठा के वो मुख्तलिफ शहरों में और मुल्क की मुख्तलिफ जगहों पे वो पहुंचाने की जिम्मेदारियां अदा करते हैं. तीसरे नंबर पे मार्केटिंग सर्विसेज, वो जो हमारे लिए मुख्तलिफ एड्स बनाते हैं, हमारे लिए मुख्तलिफ मार्केटिंग कैंपेन्स चलाते हैं, जिसमें हमारी प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है और उसकी एडवर्टीजमेंट की जाती है. ये हमें सर्विसेज देने वाले लोग हैं. चौथे नंबर पे फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें बैंक्स, ज्यादातर बैंक्स आएंगे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आएंगे जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेंगे कि हम लोग अपने फाइनेंशियल मैटर्स जो है उसको स्मूथली चला सकें.
So these are the four different factors which affect the decision of the ऑर्गेनाइजेशन. सो रीसेलर नंबर थ्री. अब ये जो चार हैं फैक्टर्स हैं, इन चार फैक्टर्स को हम लोगों ने पहले डिस्कस तो कर लिया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ. ये रीसेलर होते हैं. रीसेलर का मतलब क्या होता है? वो जो हमारी प्रोडक्ट इसलिए खरीदते हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे और वो कंज्यूमर्स तक पहुंचा देंगे. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट रीसेलर मींस wholesalers and retailers. They are basically the resellers. Then physical distribution firms, I have discussed discuss in detail. These are the firms which physically take our product to the end user or the final users in different regions of the organization. Marketing agencies, as I've told you that they are the marketing agencies which give us different marketing services. And for financial intermediaries mean these are the banks and other financial organizations. So number three. So we have studied two factors of microenvironment. Now we will study the third factor, which is competitor. Competitor means competitors are two organizations who are dealing in the same market with homogeneous product. Homogeneous product means similar product. So when competitor has to change anything in their products, or when they produce something new, then we also should go to produce new things, and we also should offer the same product and same in the same way to the consumers. So competitor वो लोग होते हैं जिनको देख के दूसरी कंपनीज वाले जो उसके competitors होते हैं उनके decisions influence होते हैं. और मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए हम लोगों को पॉलिसी को के ऊपर नजरसानी करनी होती है. ये हम लोगों ने पिछली क्लास में एक एग्जांपल पिछले वीक में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने प्रियस और होंडा की एग्जांपल दी थी और मिठाई की दुकानों की हम लोगों ने इसमें एग्जांपल दी थी. ठीक है. कंपेटिटर्स जो है नॉर्मली दो किस्म के होते हैं जी. कंपेटिटर्स जो है वो दो किस्म के होते हैं. एक होता है डायरेक्ट कंपटीशन और एक होता है सिमिलर प्रोडक्ट वाले कंपटीशन. डायरेक्ट कंपटीशन से मुराद ये है कि डायरेक्ट कंपटीशन मींस देयर इज अ कंपनी कॉल्ड पेप्सिको and they are providing Pepsi Cola, and there is a company called Coca-Cola or Company Cola which provide Coca-Cola. So Coca-Cola and Pepsi, they both are similar products, that's why they have a direct competition. Okay, since they have similar products with similar benefits to the same audience or customer in the same market, this will be considered as direct competition. Okay, there are two other companies called Unilever and P&G. So Unilever and P&G, they are also in direct competition because they provide almost the similar product to the similar with similar benefits to the market. Indirect competition means when you have a product and means you have a product and in indirect competition we do not have the same benefits but similar benefits. For example, in competition of tea there are different companies. For example, we have Supreme, we have Lipton, we have Tetley, we have Brook Bond, we have Tapal. So these all are the companies which provide same product and they will be called and these companies are in direct relationship. But there is a company called Nescafe which provide coffee. So coffee is not in direct competition with tea, but it can be used as an alternative to tea. Then we can see that a brand of coffee is in indirect competition with
टी ब्रांड्स लाइक सुप्रीम, लिप्टन, टेटली एंड ब्रूक बॉन्ड एंड टपाल। ओके जी। कॉफ़ी जो है वो डायरेक्टली रिलेशनशिप में नहीं होगी, डायरेक्ट